Hi guys, my name is Vaishnavi and welcome back to my YouTube channel Ash with Vash. So today I'm going to show you guys my perfume collection. So most of these are gifted because I love perfumes and people who love me know that already. We'll dive into this and go through my top favorites and notes of the different perfumes. उसके पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि नोट्स वगैरह क्या होते हैं. मुझे भी रिसेंटली पता चला है तो आई जस्ट शेयर इट विद यू गाइज. तो 3 तरीके के नोट्स होते हैं: टॉप नोट, हार्ट नोट और बेस नोट. सो टॉप नोट इज द फर्स्ट lighter smell that we get whenever we spray a perfume. So the second one is the heart note, which is basically the core or the main smell of a perfume. And the third one is the base note, which is more richer and deeper and basically forms the foundation of the perfume and lasts longer in comparison to the other two. That's that. हो गया, बस इतना ही ज्ञान था. अब let's move on to the more interesting stuff. So I'll start with okay, so ये मेरे finds हैं and I love them. So these two are a variation of the same brand, Skin by Titan. This one is Celeste and this one is Sheer. Let's talk about this one first. इसके notes I'll attach it here, but other than that इसकी काफ़ी वुडी सी इंटॉक्सिकेटिंग सी स्मेल है. आई रियली लव इट. दिस इज़ लाइक माई 5th-6th बॉटल. आई बिन यूजिंग इट फॉर ऑलमोस्ट 4-5 years and you can easily carry it anywhere, malls, offices, and then use it both during the day as well as night. And begin with this, and if you like it you can really buy the bigger bottle, but yeah, I love it. Okay, the other one was Sheer. So ये again इसके notes also I'll attach, but इसका smell mix of floral as well as musky notes. So people who are a fan of like a sweet fruity smell but not too overpowering, it's a perfect fit for them. Again, an amazing find. I love it. These two are really my favorites. मैं इसको बहुत समय से use कर रही हूँ and I just love them. Trust me and try them depending on आपको ज़्यादा woody notes पसंद है या sweeter side पे floral fruity पसंद है. Just pick your favorite, I mean pick one and then just give it a try. We'll move on to this one. Again, ये भी मैंने काफ़ी यूज़ कर ली है. मुझे बहुत परफ्यूम्स पसंद है. मैं बहुत लेयरिंग और मिक्स एंड मैच करती रहती हूँ. कहीं मुझे नहीं भी जाना होता है तो भी मैं घर पे लगा के बैठ जाती हूँ. मस्त, मेरे को अच्छी स्मेल आनी चाहिए भाई. So this one again is a very special one because it's gifted by a very near and dear friend of mine. This is Woodland Breeze from Chumbak. This is a very day perfume. बहुत ही fresh सी smell है. पूरा during the day आपके साथ stay करेगा and you will feel fresh. Love it. Next we'll do these two again. Oh, no. Different variations of the same brand, Carlton London. These two, Fireway and तो पता नहीं क्या है, देख लो भाई. इसको खुद मेरे को बता देना अगर पता है तो कैसे प्रोनाउंस करना है. ये मुझे रक्षाबंधन पे गिफ्ट किया है. इसी रक्षाबंधन पे शाउट आउट टू माय ब्रदर. थैंक्स ब्रो. तो 4 का पैक था, उसमें से 2 मैं ले आई हूँ, 2 घर पे ही हैं. सो वील ट्राई दीज 2 इस टर्न पे एंड देन दी अदर 2 वील सी. So अभी तक तो I'm liking them. So this one, Fireway, this one is like again a mix of both sweet like floral and musky notes. So more like इसका heart note is vanilla and then the base note is again musky. So I already told you, तो अब आपको समझ आई होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या मतलब है इन बातों का. This is my first bottle, so I don't have much to say about it, but yeah, we'll keep you updated in part 2. If I ever make one. Okay, moving on to the next one, again from Carlton London. This one is a little different. It's more like zesty. It has orange citrus notes as well as the base notes are a little earthy. Sandalwood, cedar, ये सब मुझे स्मेल करके नहीं पता चल रहा है, मुझे पहले से पता था, मैं बस बता रही हूँ. This one is also really nice. If you like citrus notes, this one is for you. You can give it a try.
So there's one more perfume left, but we'll do it in the last. Let's move on to body mists for now. Let's start with this one. This one is the Victoria's Secret Vanilla Sparkle. It's their holiday edition special. It's amazing. I love it. So it's like whipped vanilla in a bottle as well as soft cashmere notes. So while we're at it, let's just have a look at this one as well. Again, vanilla. Clearly, I'm a vanilla girl. This one is Victoria's Secret Bare Vanilla Shimmer. It's similar to the one that we just saw, but it also has like shimmer in it. I don't know if you can see it, but there'll be glitter on your body, and it's amazing. Who doesn't like glitter? Come on. I think you can see it now, and if you don't, then buy it and try it, guys. What are you waiting for? Okay, moving on to the last one, another almost empty bottle. ये तो कुछ चीज़ें होती है ना जो आप ऐसे लोगों को बोल बोल के उन्हें मजबूर कर देते हो आपको गिफ्ट करने पे. दिस इज़ वन ऑफ देम. आई वॉन्टेड टू बाई इट बट आई वॉन्टेड टू यूज़ इट बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू बाई इट. तो मैं अपने भाई को बताती रहती थी कि एक ब्रांड है सोल de Janeiro, उसका बॉडी मिस्ट है, मुझे बहुत पसंद है. उसे लिंक्स भेजती रहती थी रैंडमली कि देखो नायका पे मिलता है ये वो. तो वन फाइन डे ही डिसाइडेड टू गिफ्ट इट टू मी. उसकी खुद की मर्जी से, मेरा ऐसा कुछ कहा नहीं था उससे खास. ओके, अगेन शाउट आउट टू माई ब्रदर फॉर गिफ्टिंग दिस टू मी. So amazing. And just by the way, if you're watching, ये खाली होने वाली. This is pistachio and salted caramel. इसको मैं स्प्रे तो नहीं करूँगी, एक दो बूंद बचे हैं इसमें ज़िंदगी के. And trust me, जो भी इन्होंने लिखा है ये बिल्कुल वैसा ही स्मेल करता है. बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. मेरा फेवरेट बॉडी मिस्ट है ये. And I'm definitely going to buy another one. So moving on to the last one for now. This beauty right here. Can you look at the bottle? Can we give a moment to the bottle, guys? Oh my god. So this is Very Good Girl by Carolina Herrera. And I love it. The top notes are lychee and red currant. The heart note is rose and the base note is vanilla. So this was again a gift. मैंने 3 साल तक अपने दोस्त को मॉल के चक्कर लगवाए, ये स्मेल करवाया कि भाई देख क्या अमेजिंग परफ्यूम है. एंड वन फाइन डे सरप्राइजिंगली ऑन हिज ओन, पता नहीं उसे कैसे पता चला कि मुझे ये चाहिए, एंड ही डिसाइडेड टू गिफ्ट इट टू मी. इट्स अमेजिंग, इट स्मेल्स अमेजिंग. आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट इट. It's very expensive. So that's it for now, guys. If you want more of such videos, know the reviews and hear about more perfumes and more luxurious perfumes, then please, what are you waiting for? Like my video right now. Let me know how did you like this one in the comment section. Follow this channel and share it with your friends. जल्दी से मुझे फेमस करो, मुझे पैसे मिले, मैं मस्त घूमूं और परफ्यूम्स खरीदूं, आप सबको दिखाऊं परफ्यूम्स अपने. गाइस, मम्मी सही कहती हैं, मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, उसी में मेरी भलाई है. एक वीडियो बनाने गई थी मैं. Please, this is a cry for help now. Like, share and subscribe, guys. It's not funny anymore. Till then, take care. Bye bye.